for permutation. We will study about the permutation. Okay. So first of all, I am going to write here the definition of the permutation. The different arrangement. Okay. The different arrangement which can be made out of a given number of things by taking some or all at a time, or are called permutation. So if you guys are interested, then I can write the definition here. The different arrangements, the different arrangements which can be made out of a given numbers. Given numbers of things by taking some or all at a time. Some or all at a time are called permutation. Okay. The different arrangements which can be made out of a given number of things by taking some or all at a time are called permutation. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 3 नंबर है 1 2 3, तो हम इन्हें किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं. परमुटेशन का लिटरल मीनिंग जो होता है वो सजावट से होता है ना. जैसे कि 1 2 3 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर 1 3 2 लिखा जा सकता है, या फिर 2 1 3 लिखा जा सकता है, या फिर 2 3 1 लिखा जा सकता है ना, या फिर 3 2 1 लिखा जा सकता है, या 3 1 2 लिखा जा सकता है ना. सो देर आर द डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ दीज 3 नंबर्स, है ना. देर आर द डिफरेंस. हर एक अरेंजमेंट का अपना एक मतलब होता है ना. सो 3 नंबर थे हमारे पास और 3 ही हमने सिलेक्ट कर लिए 3, है ना. तो तीनों को हमने सिलेक्ट करके उनको अरेंज किया 3p3, दैट इज इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल्स टू 6. ओके. 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6. तो देर आर 6 अरेंजमेंट 2 2 एंड 2. तो आप उनको 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं. परमुटेशन का मतलब एक तरीके से ये होता है कि अगर आपके पास में कोई 2 या 3 चीजें हैं, आप 3 चीजों में से कोई 2 चीज कितने तरीके से आप उठा सकते हैं, कितने तरीके से आप नोट कर सकते हैं. तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. और एंड डिफरेंट डिस्टिंक्ट थिंग्स में से अगर आप आर सिलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज सेड टू बी एनपीआर. इट इज डिनोटेड बाय एनपीआर, एन डिस्टिंक्ट आइटम में से, है ना. इफ n distinct item are there, distinct item are there, तो n distinct item में से r सिलेक्ट करें तो कितने तरीके से कर सकते हैं. उसका जो फॉर्मूला होता है npr का n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. ओके. n माइनस r फैक्टोरियल. इट्स वेरी सिंपल. तो ये इसका सिंपल सा नोटेशन है. r जो होगा आपका, या तो आप कम से कम एक तो सिलेक्ट करेंगे उनमें से, है ना, या फिर आप सारे के सारे सिलेक्ट कर लेंगे, उनके बीच का कोई नंबर. तो r विल लाई बिटवीन 1 एंड n. ठीक है. और दूसरा क्या होता है कि फैक्टोरियल की टर्म्स में अगर आप बात करें तो 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है. इसको ख्याल रखना है ना. चलिए यहां से शुरू करते हैं कि इवेल्युएट द फॉलोइंग. छोटे छोटे सवाल रहेंगे हमारे यहाँ पर. इवेल्युएट द फॉलोइंग. ओके. तो
कुछ सवाल हैं जैसे कि छोटे छोटे सवाल नंबर 1 12 P4 second 12 6 P4 and third 8 P8 we need to calculate ओके 8 सिंपल सिंपल से यहाँ पे आपका फॉर्मूला है कुछ नहीं लगाना है जब आप 12 P4 की बात करते हैं तो 12 P4 को आप कैसे लिखेंगे 12 फैक्टोरियल divided by 12 minus 4 factorial. What about this? 12 factorial and divided by 8 factorial. Okay. 12 factorial को आप क्या कर सकते हैं 12 into 11 into 10 into 9 and into 8 factorial. 8 factorial तक लिख सकते हैं and divided by 8 factorial. 8 से 8 कैंसिल हो गया 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया तो ये बच गया आपका है ना लेट सो ये क्या हो गया हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी ये हो गया आपके पास 90 है ना और 12 into 11 कितना हो गया हमारे पास है ना ये हो गया 132 ओके 132 एंड मल्टीप्लाई बाय 90 तो इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 0 9 दूनी 18 1 28 2 11 तो इट्स द फाइनल आंसर इट्स द फाइनल आंसर ओके तो गाइस इसी तरीके से आप सेकंड वन जो है आपका 6P4 है ना 6P4 को आप जब कैलकुलेट करेंगे 6P4 का मतलब क्या हो गया 6P4 का मतलब हो गया 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 फैक्टोरियल है ना सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है दैट इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इसका क्या मतलब हो गया 6 into 5 into 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल ओके डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इट्स कैंसिल आउट तो ये हो गया 6 5 या 30 and 34 ja 120 123 ja 360 it's very simple you know similarly we can calculate the another one example 8P8 what about the 8P8 8P8 equals to 8 factorial then divided by 8 minus 8 factorial that is equals to 8 factorial divided by 0 factorial that is equals to 8 factorial divided by 1 because the 0 factorial value is 1 and it is nothing but the equals to 8 factorial and you can expand the 8 factorial and find out the final value here what about the 8 factorial you know 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 so you can find out the final answer for it okay so in the next question next example is if 20 for example 20 PR equals to 6840 then find the value of R then find R okay find the value of R so it's very simple just write down the simple formula that is 20 factorial divided by 20 minus R factorial and equals to 6840 6840 so how can we write it here if you see in that case okay in this case if you write it here like this 20 and we can write it like this okay 20 factorial and divided by 20 minus R factorial what does it mean 20 minus R factorial so 1 in another way we can say that is 20 minus R it can be written as 1 into R okay 1 into 2 into 3 into
that is equals to uh, r. No, it's not the case actually. 20 minus r minus 1 तक हम इसको लिखेंगे. It's not the case and it's not the right way to handle out it. Okay. No. It's not the right thing. Here we have the another example, that is np4 equals to 20 times np2. Then find the value of it. Find the value of n. So simply the simple calculation, that is n factorial divided by n minus 4 factorial, and it is equals to 20 times n factorial and divided by n minus 2 factorial. So we can cancel out it, n factorial by n factorial. So it's about 1 upon n minus 4 factorial and 20 upon n minus 2 factorial, है ना, सिंपल. और इसको आप क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन एन माइनस 4 फैक्टोरियल को एज इट इज लिख सकते हैं, और 20 अपॉन एन माइनस 2 एन माइनस 3 को और एन माइनस 4 ये फैक्टोरियल में कर सकते हैं. इससे ये कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 20 इक्वल्स टू एन माइनस 2 और एन माइनस 3. ओके, तो ये क्वाड्रेटिक आपके पास बन गया. तो ये जो 20 इक्वल्स टू आपको मिलेगा यहाँ पे, यहाँ से आप 20 के फैक्टर कर लीजिए, दो कंसेक्यूटिव फैक्टर बना लीजिए, है ना. तो आप इसको 20 को लिख सकते हैं 4 इंटू 5, 4 इंटू 5, है ना. 4 इंटू 5 इक्वल्स टू, या आप इसको एक कम करें, ऐसे भी कर सकते हैं ना, और या फिर आप इसको, चलिए इसको आप फैक्टर्स कर लीजिए आप इसके, एन स्क्वायर माइनस का 2n माइनस का 3n एंड देन प्लस का 6. ओके, तो इट विल बी इक्वल्स टू एन स्क्वायर माइनस का 5n प्लस का 6 इक्वल्स टू 20, है ना. और ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14 इक्वल्स टू 0, है ना. तो इसके फैक्टर कर लेते हैं, है ना, बाय द मिडिल टर्म स्प्लिट. 7 माइनस 2 n माइनस का 14 इक्वल्स टू 0. तो एन स्क्वायर माइनस का 7n प्लस के 2n माइनस का 14 इक्वल्स टू 0. सो n कॉमन आ गया, n माइनस का 7 रह गया यहाँ पे, प्लस का 2 कॉमन आ गया, n माइनस का 7 रह गया यहाँ पे इक्वल्स टू 0. सो n माइनस का 7 और n प्लस के 2 इक्वल्स टू 0. So here we have the two values of n. That is, one is n equals to 7 and another one is n equals to minus 0. So it's not possible because n is our integers, positive integer, natural number. So it cannot be equals to minus 2. So n equals to 7 is the right answer here. Okay. Now we will move to the another one example. For example, n plus 5 p n plus 1, okay, equals to 11 n minus 1 then divided by 2 and multiply by n plus 3 p n. Then find the value of n. Then find n. Okay, find the value of n. So in the similar manner we will try to find out the solution of this question. तो सिंपल आप क्या करेंगे, n प्लस 5 फैक्टोरियल लिखेंगे. देन वी राइट हियर n प्लस 5 माइनस n प्लस 1 फैक्टोरियल. ओके, एंड 11 n minus 1 divided by 2 and n plus 3 factorial, then divided by n plus 3 and minus का n factorial. Okay, cancel out it.
and n is n cancel out. So how we can write it? N plus 5 and n plus 4 and n plus 3 factorial and divided by its 4 factorial, okay, equals to 11 n minus 1 divided by 2 and n plus 3 factorial and divided by 3 factorial, okay. So n plus 3 factorial is cancelled out by it, and 3 factorial divide the 4 factorial by 3, that is equals to 4, and 2 2 is 4, okay. सो क्या मिलता है हमें यहाँ पर? ये मिल जाता है ओके, साथ में इसकी मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, एन स्क्वायर प्लस 9n, ओके, एंड प्लस का 20 और इक्वल्स टू 22 एंड माइनस 1, ओके, नाउ विच इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस का 9n plus का 20 equals to 22n and then minus के 22. So it will be n square and minus के 9n or minus 22n. So what about it? It's around 12. Not about 12. कितना हो जाएगा? 22 में से अगर आप 9 माइनस करेंगे 13. Yeah, 13n and प्लस का 44 इक्वल्स टू 0 है ना. अगर आप 22 में से 9 माइनस करेंगे तो हाँ, तो 22 में से आप 9 निकाल दी 13 बचेगा, ओके. सो अब ये हो गया आपका ये. अब 44 के दो ऐसे फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करके तो इसे 11 और प्लस करके आपका 239 हो गया एन स्क्वायर माइनस 11 प्लस का 2n और प्लस का 44 इक्वल्स टू 0. तो एन स्क्वायर माइनस का 11n एन प्लस का माइनस का 2n प्लस के 44 इक्वल्स टू 0 है ना. तो यहाँ से n कॉमन लें, n माइनस का 11, ठीक है, एंड देन माइनस के 2 कॉमन लें, n लेट मी चेक where the mistake arrived. So minus का 2, okay, where is the mistake? Okay, let me check. I think it's 42. It should be 42, no? So n square minus 13n plus 42 equals to 0. Okay, plus 42 equals to 0. Okay, so the factor will be changed here. Okay, so n square 7 6 are 42 and 7 plus 6 equals to 13. That is 7 plus 6 and plus 42 equals to 0. Okay, n square minus का 7n minus का 6n plus का 42 equals to 0. So what about it? Take n common here, n minus 7 minus 6 common here, n minus 7 equals to 0. So n minus 7 and n minus 6 equals to 0. So what about the value of n equals to 7 into 6. So there are two values of n, either 6 or 7. So both are the correct answer. Okay. Now we will try to find out the. We will try to solve the another question here. Similar question. So if np4 equals to 2 times 5p3, then find n. Okay, then find n. So in the similar manner, it will be written as n factorial upon n minus 4 factorial, that is 2 times 5 factorial divided by 5 minus 3 factorial. Very simple, okay. So n factorial ऊपर लिखा जाएगा n
n minus 1, n minus 2, n minus 3, ओके, और डिवाइडेड बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल, इसको आप ऐसे कर लीजिए और इसको लिख लीजिए यहाँ पे n माइनस 4 फैक्टोरियल एज इट इज, और बराबर में कर लीजिए आप 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 दैट इज 2 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट हो गया आपका, है ना, बराबर में क्या बचा आपका 5 फैक्टोरियल, ओके 5 फैक्टोरियल, और इससे आपका कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये 5 फैक्टोरियल आपका क्या बचा, n माइनस 1, n माइनस 2, n minus 3. There are 4 factor 1, 2. And it will be written as 5, 4, 3, and then 2. Okay. So, guys, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो फैक्टर्स मिलेंगे एक तरीके से, एन की वैल्यू क्या होगी, और ये बहुत आसान है अपने आप में, अगर आप इसे गौर से देखें तो ऐसे एक पैटर्न पकड़ लीजिए, वैसे तो आपको इसे 4 टाइम मल्टीप्लाई करके उससे कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट देयर इज नो नीड फॉर दिस, ये एक सिंपल सा पैटर्न है, एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3, और ये सिंप्लीफाई करा, इसका मतलब एन की वैल्यू 5, ठीक है, एन इक्वल्स टू 5, तो वेरी सिंपल आंसर है, there is no need to move further to solve it. So here we going to deal the another example. I'm going to deal with another example. Find the value of n if 9p5 plus 5 times 9p4 equals to 10pn. Okay, so what about this? 9 factorial divided by 4 factorial, okay, then plus 5 times 9 factorial divided by 5 factorial, okay, equals to 10pn. So what about it? It's 9 factorial divided by 4 factorial and plus 9 factorial divided by 4 factorial equals to 10p4, and it can be written as 2 times 9 factorial divided by 4 factorial equals to 10p4 or 10pn, and we can write it 10 factorial and 10 minus n factorial, okay, we can write it like this here too, okay. So here we get, this implies that, what does it mean? It means that it can be written as we can write it 2 into 9 factorial divided by 4 factorial, and it can written be as can be written as 10 factorial 9 factorial upon 10 minus n factorial, okay, so it's equals to 5. So this implies that 9 factorial upon 4 factorial, and it is equals to 5 times 9 factorial upon 10 minus n factorial. Sorry, 5 times, not 5 factorial. It's 5 into 9 factorial upon 10 minus n factorial. तो यहाँ से क्या implies होगा आपका? This will implies that 5 factorial into 4 factorial should be equals to 10 minus n factorial. इस चीज को बराबर होने के लिए आपको इसके बराबर होना पड़ेगा, क्लियर? इसका मतलब क्या हो गया कि 5 फैक्टोरियल किसके बराबर होना चाहिए, 10 माइनस n फैक्टोरियल के बराबर होना चाहिए। तो ये तभी हो सकता है जब 10 माइनस n किसके बराबर हो, 5 के बराबर। ये तभी हो सकता है जब n बराबर 5 के बराबर।
तो n की वैल्यू क्या आ गया ऐसे 5। ठीक, तो ये छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स हैं और सिंपल कैलकुलेशंस हैं, जस्ट वी नीड टू प्रैक्टिस दीज कैलकुलेशंस। ओके, so similarly we will try to solve the another one example here. Prove that we need to prove n p r equals to n minus 1 pr plus r times n minus 1 p r minus 1. Okay, तो हमें ये प्रूफ करना है कि साहब एन पी आर बराबर जो होता है एन माइनस वन पी आर प्लस आर टाइम्स एन माइनस वन पी आर माइनस वन के बराबर है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से प्रूफ करते हैं। इसे राइट हैंड साइड को हम लेके सकते हैं। हमारे पास राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, एन माइनस वन पी आर प्लस आर टाइम्स एन माइनस वन पी आर माइनस वन, इसको सोल्व करते हैं। एन माइनस वन पी आर क्या हो गया, एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस वन माइनस आर फैक्टोरियल प्लस आर इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये लिखा जाएगा एन माइनस माइनस वन और माइनस आर माइनस वन। ओके, फैक्टोरियल, इसको हम लिख सकते हैं एन माइनस वन फैक्टोरियल, और ये लिखा जाएगा आपका, अगर एन माइनस, आप एक काम करें इसमें इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दे, नीचे एन माइनस आर बना ले इसमें, है ना, नीचे क्या बना ले, एन माइनस आर बना ले। तो नीचे एन माइनस आर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एन माइनस आर से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एन माइनस आर से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये एन माइनस आर से नीचे मल्टीप्लाई करो, चलो, है ना, एन माइनस वन माइनस आर फैक्टोरियल प्लस आर टाइम्स एन माइनस वन फैक्टोरियल, और नीचे क्या होगा, एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, इसके बाद इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर, है ना, डिवाइड में क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं आप एन माइनस आर फैक्टोरियल, वेरी सिंपल। ओके, और ये लिखा जाएगा आर इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड में भी एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो आप कॉमन ले लें अभी, एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा, एन माइनस आर एंड देन प्लस आर। ओके, तो इससे क्या हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, एन, दैट इज एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन इंटू एन माइनस वन क्या होगा आपका, एन फैक्टोरियल, देन डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, okay, which is nothing but the NPR. Okay, so you can solve these like this. So these are the normal calculations and normal questions here, so you can practice, and there are number of problems, number of such problems are there. Okay, similarly we can go with the another questions like we have some set of questions here. Okay, for the practice.